But before starting today's lecture, let's get a brief overview of the previous lecture. कि हमने last lecture में क्या cover किया था? As we all know कि हम so far information security में जो सबसे detailed topic था that was cryptography जो हम पढ़ रहे थे. तो last lecture में हम लोगों ने cryptography के जो last topics थे वो cover किए थे जिसमें hashing algorithms थे. As उसमें specifically हमने MD5 और SHU1 का structure discuss किया था and then we compared it with different variations of SHA. और उसके बाद हमने end biblical HBAC discuss किया था that if you want to achieve authentication along with integrity, then how we can mix hashing algorithms with our message authentication codes. So this is about last lecture. Last lecture में मैंने आपको बताया भी था that हमारी जो cryptography से relevant जितने भी lectures है that got ended. That was it जो हमने cryptography से relevant पढ़ना था. और अगर अभी तक हम information security course तो मैं आपको थोड़ा सा brief overview दूँ तो that is कि हमने सबसे पहले introduction दिया था कि information security होती क्या है, what are the basic principles in information security जिस जो हम लोग achieve करने की कोशिश कर रहे हैं. और वो कौन-कौन से थे? 3 basic principles of information security. CIA. Yes, CIA. And then we studied first security mechanism that was access control mechanism. और access control mechanism में हमने देखा था कि कैसे हम authentication और authorization की base पे access provide कर सकते हैं. And that was actually about computer security. क्योंकि हम normally access control जो है वो computers और environments में और एक जो हमारे restricted networks पे उन पे कर सकते हैं. It's not completely outside of that. तो जो access control mechanism होता है वो mostly computer security का part होता है. हम जब एक single computer को उसकी computer security को handle करने की कोशिश कर रहे होते हैं या उसको design करने की कोशिश कर रहे होते हैं. और computers that are restricted or designed within a given small network. उसके बाद हम लोगों ने cryptography start कर दी थी, like how we can protect our information by hiding it or by making sure that it's not being read by unauthorized people. और उसमें cryptography although main purpose जो है वो confidentiality होता है, but by the end of it we studied that how it can provide us authentication as well, or you can say integrity as well. आज वाले लेक्चर में हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी स्टार्ट करने वाले हैं. और नेटवर्क सिक्योरिटी भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है एज क्रिप्टोग्राफी, बट वी विल बी ट्राइंग टू मेक श्योर कि हम इस सब्जेक्ट में उसको जितना ब्रीफली और जितना एट द सेम टाइम उसकी जितनी डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको टच कर सकें. तो आज वाला जो लेक्चर है दैट इज प्योरली अबाउट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रूडर्स क्या होता है, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंट्रूडर्स दैट आर देयर इन द एनवायरनमेंट और इन होल सिस्टम. उनको देखेंगे उनकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती है. देन हर टाइप में स्किल लेवल सेट क्या होता है, क्योंकि हर तरह के जो इंट्रूडर्स होते हैं उनका डिफरेंट स्किल लेवल टेस्ट है. अगर कोई बहुत ज्यादा मोटिवेटेड क्रिमिनल इंट्रूडर्स है तो उनका बिल्कुल स्किल सेट डिफरेंट होगा. इफ देयर आर सम इनसाइडर्स और some people who don't have that much of intention, they are just trying to get some information out of that system, तो उनका skill set बिल्कुल different होगा. They might not be well trained और उनको ज़्यादा अपने footprints खत्म करने को ये सारी चीजें नहीं पता. So we will be looking into that. उसके बाद हम देखेंगे कि हम intrusion detection के लिए जो systems होते हैं वो जो different approaches use करते हैं वो कौन कौन से हैं. And by the end there would be a small activity for you guys that you have to tell me what's difference between intrusion detection systems and firewalls, how they are different from each other. Fine, so let's start today's lecture. As I said कि हम सबसे पहले देखेंगे कि intruders या फिर intrusion exactly जो people कर रहे होते हैं किसी भी network में उनके different types क्या होती हैं. So intruders, can anybody even tell me कि intruders होते क्या हैं? Like who am I saying intruders to? Are they the legitimate users or unauthorized users? No one knows कि intruders क्या होते हैं.
Okay, intruders are the ones that break into your system with, like, they are not, Attacks to securities. Attacks only. yes, you can say that they are usually associated with the people who attack on your security. Okay. So you can say hackers, crackers, anybody who actually bypass your security layer are called intruders. So there are different classes of them. First one is criminals. Like, ये वो लोग होते हैं या वो specific people होते हैं जो आपका security layer bad intention or harmful intention, although सारे intruders की intentions होती हैं वो हम, like, they just don't want, वो security breach इसलिए नहीं करते कि they are just doing it for some fun or that or any other thing. इन हर किसी की अपनी एक motivation होती है. तो पहले type of intruders जो है वो है criminals. Criminals usually बहुत ज़्यादा motivated kind of intruders होते हैं. They are the one who have some financial goal set along with security bypassing, जिनका purpose या तो होता है that they wanted to they wanted to steal someone's identity and misuse it later on, or they wanted to steal data out of your systems and then sell it on dark web or sell it on web for misuse. So they are actually financially motivated people. उनका जो backend पे, they are not someone जो कि आपकी organization को, if you are going to pay them, so they might not release that data. So they are kind of people जिनका total जो motivation level है that is different. अब अगर इनके skill level की बात की जाए तो they are well skilled people, well coordinated people. जब भी वो कोई attack करते हैं तो वो, क्योंकि there is a strong motivation behind that is financial gain, तो वो हमेशा जब भी attack करते हैं तो they do have some strategy in mind, और वो बहुत well coordinated attacks करते हैं. So first kind of intruders were the criminal ones. Internationally, criminals जो intruders होते हैं, like the ones who have financial goal at the end, उनके बारे में कहा जाता है they are typically young and usually they belong to the Eastern European, Russian or Southeast Asian region, और उनका normally they are being tracked to these specific areas. Obviously, this information is being provided by USA, तो उसमें America और बाकी Central European countries के बारे में कोई ज़्यादा details provide नहीं की, and they don't associate people to those regions itself. Although we can say कि ये biasness हो सकती है इसमें, but as it's being provided in the book, तो हम इसको इसी तरह लेके चलेंगे. Second type of intruders are the activists. Activists जो होते हैं, they don't usually have any kind of financial goal at back end. वो normally socially or politically motivated होते हैं. They're the people who had some political gain at the end, in their head, or some kind of social cause जिसके against वो आपके system में आते हैं और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं. जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, ऐसी स्मॉल न्यूज आती है दैट इंडियन हैकर्स और पाकिस्तानी हैकर्स नॉर्मली एक दूसरे के सिस्टम्स पे जो है वो अटैक कर रहे होते हैं, वहां पे अपने फ्लैग्स और कोई मैसेजेस जो है वो ड्रॉप कर रहे होते हैं. आप इस तरह की कभी कोई न्यूज सुनिए? मैम किस तरह की न्यूज आप कहते हैं? The ones जहाँ पे आप बिल्कुल like have you ever heard कि पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडियन वेबसाइट्स पे पाकिस्तान के फ्लैग लगा दिए, या फिर वहां पे कोई मैसेज अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट पोस्ट कर दिया? सेम गोज फॉर इंडिया के उन्होंने पाकिस्तान की किसी वेबसाइट को हैक कर लिया. और मैम ऐसे तो चलती रहती है न्यूज. Actually, those kind of intruders are the activist intruders. Like, they are socially or politically motivated. They have some cause. They don't want to harm your information for the sake of money. वो नहीं चाह रहे होते कि आपके सिस्टम को डाउन कर दें या आपके सिस्टम में से डेटा को चोरी करके वो कहीं पे सेल नहीं करना चाह रहे होते. Their only purpose is to defame you. Their only purpose is to post their messages to show their kind of support to some specific environment. जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कश्मीर वाले इश्यूज पे नॉर्मली पाकिस्तानी हैकर्स के बारे में कहा जाता है that they hack Indian websites, तो उसमें normally free कश्मीर या इस तरह के messages जो है वो post किए जाते हैं. So these are the kind of intruders जिनको हम normally activist intruders कहते हैं. Activist intruders जो होते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि although they have some
some level of skill, but उनके skill sets जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा refined नहीं होते, polished नहीं होते. They normally are very low. Chance मिल गया तो system में maybe they get into it, और अगर system की security strong हो, there isn't any easy target, तो वो किसी भी मतलब system को आसानी से bypass नहीं कर सकते. So there are these kind of intruders. So आप आराम मतलब you can easily tell these are the ones जिनके skill sets बहुत ज़्यादा polished नहीं होते. They hardly get into the systems easily. उनका basic purpose क्या होता है? Websites को deface करना, make sure करना कि वो available ना हो उन पे, like hardly अपनी publicity के लिए या फिर उस organization की negative publicity के लिए कोई ना कोई message post करना. That's maximum they try to do. वो कोई भी information चोरी नहीं करना चाह रहे होते वहां से, and they don't have any other purposes regardless of it. Okay, उसके बाद there is third kind of intruders which we call state sponsored. State sponsored intruders are the most lethal ones for any organization. Why am I saying that? Because they are very skilled intruders, or normally about them it's said that they are being sponsored by the governments, or they are being sponsored by some well-established organizations. And obviously, as it's said, it's saying it's state sponsored, so directly governments को जो है वो accuse कर रहे होते हो that they are the ones who are sponsoring such groups. और इनका purely purpose जो होता है वो states के aims और states की जो भी requirements या जो भी इनसे expectations होती हैं उनको fulfill करना होता है. And as they are state sponsored, and I earlier said that they are well polished and well skilled intruders or hackers or crackers, whatever you wanted to call them, and they have some state sponsored agendas, or you can say state favored agendas जिनको वो achieve करने की कोशिश कर रहे होते हैं. We know that different organizations from time to time, especially different two states, US and China, they are the ones that they keep claiming each other. They like both these states kept saying कि दोनों जो states हैं उन्होंने अपनी side पे well skilled hackers के groups जो वो they have them and they use them to get information about their rival states. Although these are the two ones जो एक दूसरे को internationally blame करते रहते हैं. Apart from that, we never heard any country के जो दूसरे को blame कर रही हो, but we know कि हर country जो है उसका जो intelligence system होता है, that has nowadays, especially जब हमारी हर information जो है networks पे travel कर रही है, सब कुछ जो है digitally हो रहा है, तो हर state जो है उनके पास एक इस तरह का group होता है, the ones that they have invested onto, और वो उनको intelligence के लिए जो है वो रखा होता है. They are making sure, although their purely purpose is to protect their own nation, but we know that that's not the scenario. So this is the third kind of intruders, that is state sponsored. उसके अलावा भी there are few other types जिनको हम किसी एक specific category में जो है वो break नहीं कर सकते, या फिर आप ये कह सकते हो उसको किसी एक umbrella के नीचे इकट्ठा नहीं कर सकते. They are usually the people जो के individual groups में काम कर रहे होते हैं. They are not criminal, they are not most of time activists, they are not state sponsored, they are just the ones जो के like they usually can fall in any category on the basis of their need. Fine, they are the groups that are working maybe sometimes in the form of groups and sometimes in the form of individuals to just support their own cause at that specific moment. So ऐसे बहुत सारे intruders होते हैं जो hobby intruders होते हैं, जिन्हें hobby hackers भी कहते हैं. The ones that just break into the system to understand that system, what the system is doing, जिसको समझने के लिए sometimes. So आप उनको किसी भी criminal या state sponsored या इन categories में जो बिल्कुल भी you can't divide them into that, क्योंकि इनका कोई खास purpose नहीं होता. They are usually working purposelessly or just trying to get into the system, to understand it, to learn about it, or most of time just they form their cause on the moment. Okay, अगर किसी system पे stumble upon हो गए तो okay, let's get this information out of it, that let's just get, or just take this identity and misuse it later on. So आप इस तरह के भी different intruders होते हैं जिनको आप normally इन 3 categories में
बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते, ग्रुप नहीं कर सकते। सो दीज वर ऑल अबाउट इंट्रूडर्स। अगर इसके अलावा आपके जहन में कोई इंट्रूडर्स की कैटेगरी आ रही है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर। इसके अलावा किसी स्टूडेंट के जहन में आ रही है कोई भी इंट्रूजन काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट यू आर थिंकिंग कि वो जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंट्रूडर्स है वो इस इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा होता? नो वन? जी हमदा। मैम रैंसम नहीं होता, जैसे कि वो कंप्यूटर को आपके लॉक कर देते हैं हैकर्स हाँ जी, और फिर तवान मांगते हैं उसका। दैट इज फॉर क्रिमिनल्स ना, उनका बैकएंड पे फाइनेंशियल गोल होता है ना, राइट? Okay, how many of you read this news? I guess it was last week's news in US के एक पुलिस डिपार्टमेंट पे ransom attack हुआ था and the hackers have gained access to it. They locked that system and they asked for some money कि अगर आपने वो पे नहीं की तो आपकी जितनी भी current investigations की डिटेल है वो कुछ टाइम में वो पब्लिक कर देंगे. What happened after that? I don't know. इतनी सी न्यूज जो है वो that was aired तो वो मैंने सुनी थी. Did they pay that or what happened later on? I don't know. बट वो जो अटैक्स आते हैं वो क्रिमिनल उसमें आ जाते हैं, लाइक वो काइंड ऑफ हैकर्स जो होते हैं वो क्रिमिनल होता है बिकॉज दे आर मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गोल. Okay, let's look into the skill levels of intruders or hackers or crackers. First one is apprentice, or you can call them that they are very early level hackers. They are the ones जिनके पास बहुत मिनिमल और वेरी लिमिटेड टेक्निकल स्किल्स होते हैं. इसमें आप जितने भी आपके एक्टिविस्ट हैं या फिर आपके इनिशियल लेवल ऑफ क्रिमिनल्स हैं उनको इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं. द वंस दैट यूज्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड प्री डिजाइन्ड अटैकिंग टूलकिट्स. वो नॉर्मली खुद से सिस्टम्स को स्टडी नहीं करते, वो ऑलरेडी जो डिजाइन टूलकिट्स हैं उनकी हेल्प से सिस्टम को जो है वो क्रैक करने की या बाईपास करने की कोशिश कर रहे होते हैं. एंड इफ दे गेट into those systems easily using those toolkits then that's fine, but apart from that उनके पास कोई और skill set नहीं होता सिस्टम को bypass करने के लिए. They might not even aware about any kind of the security terminologies. उन्हें ये भी नहीं शायद पता होगा कि स्पेसिफिक नेटवर्क को जिसको वो bypass करने की कोशिश करें जिसकी सिक्योरिटी को, वहाँ पे कौन कौन से डिफरेंट सिक्योरिटी लेयर्स इवन इम्प्लीमेंटेड है. सो दिस इज द काइंड ऑफ intruders जिनको हम normally कहते हैं they are the ones with minimalistic technical skills. They have zero idea what they are doing. All they are relying on the attacking pre-designed toolkits जो उनको help out कर रही होती है उन systems की किसी भी network की security bypass करने के लिए. So अगर तो वो उन toolkits के साथ उस system की security bypass कर लेते हैं then they are good to go. Otherwise they don't put enough effort to get into the system और वो normally they can't do it. So ऐसे जो आपके होते हैं ना hackers उनके against system को secure करना comparatively easy है. That all you need to know is currently market में कौन कौन से toolkits हैं और वो कौन कौन सी आपकी vulnerabilities को जो है वो मिसयूज करना है. तो अगर आप कभी भी इन्वायरमेंट अपना सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज अवेलेबल अटैकिंग टूलकिट्स और उनके अगेंस्ट आप अपनी सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हो. सेकंड वन आर जर्नीमैन और द पीपल हु हैव सफिशिएंट sufficient skills enough कि वो already existing toolkits को अपनी requirement के according modify करके use कर सकते हैं. That means कि they are not even highly skilled people जो कि खुद की toolkits design कर सकें या कुछ. They are the ones जो कि already existing toolkits में required like minimalistic changes करके उनको अपनी requirements के according change कर सकते हैं. या ये कह सकते हो कि वो अगर उनके पास एक toolkit है जो कि specific vulnerability को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज हो रही है तो व्हाट दे कैन डू कि वो उसको थोड़ा सा चेंज करके किसी और वल्नरेबिलिटी के अगेंस्ट उसको डिजाइन कर लेता है. इट्स जस्ट कि अगर बीइंग अ प्रोग्रामर यू नो हाउ टू राइट अ प्रोग्राम तो आप क्या करोगे, आप कहोगे ओके इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए ये प्रोग्राम है और अगर मुझे ये स्टेटमेंट चाहिए लाइक एनी अदर स्टेटमेंट देन आई कैन modify this program so that it can print another statement.
So that means कि आपको प्रोग्रामिंग की know-how होती है कि प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ पे है और ये क्या काम कर रही है, तो आप उसको सिर्फ उसी लेवल पे चेंज कर सकते हो. यू कांट राइट अ टोटल डिफरेंट प्रोग्राम ऑन योर ओन. आप सिर्फ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को चेंज कर. ओके, so ये जो काइंड ऑफ इंट्रूडर्स होते हैं या द पीपल हु हैव इंटरमीडिएट लेवल ऑफ स्किल्स, ये कौन सी कैटेगरी में, कौन सी क्लास ऑफ इंट्रूडर्स में फॉल कर रहे होते हैं? एक्चुअली दे फॉल इन ऑल काइंड्स ऑफ इंट्रूडर्स. नॉर्मली जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो अर्ली लेवल होते हैं, दे आर द मोस्टली activists, the ones who are motivated from some social or some humanitarian cause, or very early level of criminals. But these are the ones that fall in all categories. Like the activists भी हो सकते हैं, ये आपके criminals भी हो सकते हैं. There might be some state-sponsored criminals as well, or state-sponsored hacker groups as well. कि जो अभी like they are in the process of learning and they are trying to polish their skills. So this is intermediary or journeyman skill level of intruders. आप सब बच्चों को ये clear है? Is there any query regarding it? Yes, ma'am. Okay. Next one is master level of intruders, the one that have highest level of skills, or you can say very skilled hackers. They are the ones usually who are state-sponsored organizations, like the ones that actually design toolkits to harm security, or you can say to harm or to exploit vulnerabilities of other systems security. So ये जो hackers होते हैं, they have their well polished skills. They know how to exploit any vulnerability. Even as I told, they are the ones who write toolkits, attack toolkits. और नॉर्मली ये क्या करते हैं कि अगर इनको किसी भी अपनी राइवल ऑर्गेनाइजेशन की किसी वल्नरेबिलिटी के बारे में पता चल जाए, they realize that that vulnerability exists at a large level in multiple organizations in rival country or in rival countries even, तो वो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट पूरी पूरी टूल किट्स लिख के तो पब्लिश कर देते हैं, सो दैट उनको ही नहीं सिर्फ उस vulnerability को exploit करना पड़े, like कर सके, in fact the people who don't have even zero or you can say very minimalistic skills, they can even exploit those vulnerabilities. So they are the ones who are, as we know, कि ये सबसे ज़्यादा motivated hackers groups होते हैं. They are the ones that have extreme level of motivation to crack into the system or to bypass the security of any system. Or normally they are the kind of hackers class or intruders class जिससे सबसे ज़्यादा किसी भी environment, किसी भी organization या किसी भी country की जो security systems होते हैं उनको पता होता है. क्यों? क्योंकि आप ऐसे जो आपके intruders होते हैं, इनके against अपने system को secure करना is the highest difficulty level for any information security manager or information security team. क्योंकि हमें पता होता है they kept on learning, they kept on discovering new ways to get or to exploit the vulnerabilities. They are the ones who are constantly polishing their skills, and if they are going to get one vulnerability into your system, तो वो क्या करेंगे, वो उसको exploit करने के लिए पूरी की पूरी toolkit जो वो publish कर सकते हैं, so that anybody having minimalistic levels of skills can bypass into your system security. So these are the ones जिनसे आप like if you are asked कि सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन से होते हैं intruders, they are the ones जो कि आप उनको कह सकते हो state sponsored ones, the ones who have master level of skills, and the ones who can who knows how to write attack toolkits, because यही वो लोग हैं जो आपकी if they wanted to exploit your organization or any vulnerability into your organization, they will be doing that without any hesitation, and they are highly difficult to defend against. Clear? So these were the three basic kinds of or skill levels of any intruders. उसके अलावा भी there are different kinds or different classes of intruders जिनको हम normally we can't put into any specific class, या फिर आप ये कह सकते हो कि उनको normally
इन्हीं classes के against sometimes classify किया जाता है. So it depends upon the organization to organization and information security team to information security team तो वो इनको किन category में place करते हैं. जैसे कि masqueraders are not usually, most of time they are not the intruders. Normally ये भी हो सकता है कि आपकी organization के कोई लोग हैं जो एक person जो है वो दूसरे person के authentication rights को use करके वो act कर रहा हो. Like for example right now there are, if I'm saying कि आपकी क्लास में 35 students और इस टाइम पे अगर 33 present है तो मुझे नहीं like एक person जो है वो दो devices से दो different names से जो है वो log in हुआ है. I can't identify that. What he is doing कि वो masquerade कर रहा है दूसरे user name को. Clear? So ऐसे भी intruders होते हैं जो आपकी organization में they penetrate into the system by using access rights of an other user. तो आपको उनको भी identify करना होता है. So they also fall in the category of intruders. उसके बाद the people who misuse their access rights to get unauthorized access to the data. Like अगर आपको किसी info, like you are not given access to change in like and modify any file. For example, मैं सिया को कोई file जो है वो send करती हूँ as an assignment. I ask him to share with the class. What he does कि उसके पास वो अपनी access rights को misuse करता है और वो उस data को change कर देता है. Like he tried to do something that he's not authorized to do. So वो, they are also kind of intruders because one way or the other they are getting into the system the way they shouldn't be and misusing some of information. उसके बाद there are the people जो कि आपके like the ones that have supervisory control. हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ that they are the kind of people जिनके पास supervisory control होता है वो उसको misuse कर रहे होते हैं. जैसे कि किसी specific person की access rights को change कर, access rights कह रही हूँ, उसके logs को change कर देना कि maybe उसने किसी file को access किया and his supervisor doesn't want कि किसी और को पता चले कि इसने ये file को access किया था, इसने इसको modify किया था, उसके footprints को खत्म करना. So they are the also people who participate and considered as intruders, but आप उनको already existing जो हमने classes पढ़ी हैं उनमें classify नहीं कर सकते because they might have some criminal motivations. At the same time, it's possible they have some social or humanitarian causes, and maybe they are the ones that are being sponsored by some state and they are masquerading within an organization as an employee, but वो किसी और organization के लिए काम कर रहे हैं. So they can fall in all these classes, but depending upon the nature of their intrusion. कि वो उस टाइम पे intrusion जो है वो किस point से या किस level पे motivate होके किस backend goal से motivate होके perform कर रहे हैं. So if you just have to classify the types of intruders, तो सिर्फ वही 3-4 नहीं है जो हमने पढ़ी. There are others that also there, but you can't classify them into some specific class. Okay. Then there are a few other terminologies that you must know. First one is user trespassing. Trespassing क्या होती है? आपने ये terminology, if you have seen different documentaries regarding information security or different movies regarding information security or even seasons, तो आपने ये term बहुत ज़्यादा सुनी होगी trespassing. कोई आप में से बता सकते हैं trespassing क्या होती है? Trespassing is intrusion, simple, like entering into the system without required permissions or invade someone's secure environment. Or user trespassing क्या होती है? User intrusion, that means you are getting into the system by some unauthorized login details. Like system give you that access क्योंकि आपके maybe username गलत है, password गलत है, but system ने फिर भी आपको access provide कर दिया because there was some kind of vulnerability in that login mechanism. उसके बाद second, like अगर आप user trespassing कर लेते हो तो एक तो हो सकता है कि आप unauthorized login कर सको. दूसरा ये होता है कि आप अपने privilege को misuse करो. Like if you are given some specific kind of privilege, maybe जैसे भी हमने previously पढ़ा कि
you are given a supervisory rights and what you did या admin rights to what you did, आपने उनको misuse किया, आपने किसी और user की login होके उसके logs को change किया या कुछ भी ऐसा, तो वो user trespassing करना चाहता है. Like you perform some kind of activities, unauthorized activities as an user, maybe by using wrong authorization details or using right ones and then misusing them. उसके बाद सॉफ्टवेयर ट्रेसपासिंग ये होती है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को या फिर जो सिक्योरिटी लेयर है उसको बाईपास करते हो. ये तो आपने यूजर क्रेडेंशियल्स के थ्रू की ना यूजर ट्रेसपासिंग में. और सॉफ्टवेयर ट्रेसपासिंग में क्या होता है कि आप किसी न किसी वेल डिजाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हो, मे बी वायर्स के थ्रू, वॉर्म्स के थ्रू या फिर ट्रोजन हॉर्सेस के थ्रू, कि आप एक बैक चैनल क्रिएट करके किसी न किसी सिस्टम की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हो. Any point of information security, like that can be confidentiality that's been compromised, integrity that's been compromised, or availability that's been compromised. So these are the terminologies that you must know. Clear? So abhi clear hai? Yes, ma'am. Trespassing kya hota? Okay, then there are different examples of intrusions. जिसमें आप like you can look into that how we can say that intrusion is being there, या फिर आप किसी भी सिस्टम को जब intrude करते हो तो what are the different ways of doing that, या फिर किस तरह आपको पता चलता है. remote root compromise is one way of intrusion. Then web server defacement जिसमें DDoS के या DOS के attack के through आपका server जो है वो available ही रहता, it is again intrusion. Remember one very important thing with बच्चे, जब मैं information security की बात करती हूँ ना तो it's not just confidentiality that I'm talking about all 3 parameters of information security, that is CIA. Networks में अगर आपका web server down भी है ना तो वो भी इसका भी मतलब है कि आपकी information security जो है compromise हो गया, because it's not available at the moment when it should be. So उसमें normally आपके वेब सर्वर डिफेसमेंट आ जाता है, जिसमें अगर आपका नादरा का सर्वर डाउन हो जाए या आपका कोई क्रिटिकल लाइक पूरी जो हमारी नेशनल असेंबली है या फिर इस तरह की पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट जो है वो डाउन हो जाए या उस पर कोई लाइक रॉन्ग काइंड ऑफ मैसेज जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाए, तो एक्चुअली क्या होता है कि आपकी लाइक देयर डेफिनेटली देयर सम काइंड ऑफ इंट्रूजन दैट हैपेंड जिसकी वजह से वो सब कुछ हो रहा है. So there are different types of examples of intrusion. Just go through all these one by one, and if you have any query, do ask me about it. Any query regarding it so far? No, ma'am. It seems like there are just 2 to 3 students who are active. बाकी सब बच्चे जो है वो सिर्फ digitally present है. Okay. There are few chat messages. No, ma'am. मतलब सिर्फ ये इसका no, ma'am का मतलब ये था कि आप mentally भी present है. Okay, moving forward, there are few behaviors that are very common in intruders. Like, obviously, first के वो self-motivated होते हैं. They are the ones. Okay, fine. Got your point, bachchan. They are the ones that are trying to bypass the security layers to get some benefit. So normally, there is some common behavior sets that are there. जिसमें normally आ जाता है कि they are trying to get some information. They are, trying to use some links between information to make or to gather exactly what's happening into that system. They're the ones who are trying to escalate their privileges. So actually these are some of the behaviors जिनकी basis पे हम normally intruders को detect करते हैं. They're the ones who are trying to cover their tracks. They are maintaining access. They are exploiting system or trying to gather information that they are not authorized to. So बहुत सी like these are just 5 to 6 intruders behaviors that are written over here. But अगर आप current times में जो जितने भी आपकी
systems हैं और especially the ones that are highly secured, उनमें देखो तो उनमें tons of ऐसे behaviors जो हमको list down किया जाता है और उनके against systems को train किया जाता है to identify such intruders. But although these are the very limited or very minimalistic behaviors about intruders that are given in this example, but there are so many others जिनको हम normally based systems या in systems में यूज करते हैं, जो स्पेशली हमारे जो आजकल AI बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं या मशीन लर्निंग बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, उनमें तो ये आपके पास पूरे के पूरे डेटा सेट्स होते हैं जिनमें इंट्रूडर्स के बिहेवियर्स की डिटेल्स जो है वो that are being designed and they are used to train the system. So अभी इस लेक्चर को इस सेशन में यहीं पर रोकते हैं. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ लें. नेक्स्ट सेशन में जो है वो हम लोग विल बी डिस्कसिंग के हर डिफरेंट काइंड ऑफ इंट्रूडर जो है उसका बिहेवियर दूसरे से कैसे वेरी कर रहा होता है. लाइक क्रिमिनल्स का डिफरेंट होता है, इनसाइडर्स होता है उनका डिफरेंट होता है, बिकॉज दे आर behaving in a different way. They are the insiders. That means they have privileges or they have some rights